Namaskar, I am Ajinkya Bend and I welcome you to the 6th episode of our Sri Lanka travel series. The first episode was about Colombo, in which we experienced top things to do in Colombo. Second episode was about Jaffna, in which we explored some beautiful places and Jaffna's history. In the third episode, we explored the sacred city of Anuradhapuram, which is known for its Buddhist roots and culture. And in the fourth episode, we were in Dambulla and visited the famous Lion Rock of Sigiriya. In the fifth episode, we experienced this beautiful train journey from Kandy to Ella. In this episode, we are gonna reach Ella and get settled in our very beautiful hostel. उसके बाद we are gonna explore and visit the 9 Arch Bridge. तो शुरू करते हैं. अभी ये ट्रिप में मैंने कोई भी हॉस्टल या फिर कोई भी होटल पहले बुक नहीं किया, वहाँ पे जाने के बाद ही बुक किया. नो दिस कैन पुट मी इन टू ट्रेवल सम डे, अभी हो सकती है परेशानी, बट जनरली आई हैव ऑब्जर्व कि जिस दिन जाते हैं उस दिन अगर हम रिज़र्व कर रहे हैं या फिर उस दिन बुक कर रहे हैं तो रेट्स काफ़ी डाउन हो जाते हैं. जैसे कि ये बैकपैकर्स पैराडाइज, ये कल 600 रुपये के ऊपर था. फिर टी गार्डन ये भी 600 रुपये के ऊपर था, और आज ये कुछ 300 के आसपास आ गया. तो वी कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब आधा हो जाता है. दिस इज़ हाउ आई बुक माई होटल्स व्हेन आई बैकपैक. Place is giving me a feeling of being in Kasol and Manali. काफ़ी कैफेज और काफ़ी अच्छी कल्चर है यहाँ पे. ये अभी बड़े बड़े बैग्स, ये वाला और ये वाला, ये बैग लेके चलने की आदत सी हो गई. पहले दिन जिस दिन अकोला से जब निकला था, घर से जब निकला था, जब पहली बार बैग उठाया तब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भारी बैग होगा दिल्ली में सामान उतार दो. फिर बाद में धीरे धीरे इस बैग के वज़न की आदत हो गई. अभी तो मैं मतलब स्टेशन से भी लगेज के साथ आई हैव क्रॉस्ड 3 किलोमीटर्स विद दिस बैग्स. भटक गया था मैं, पता नहीं booking.com पे एड्रेस कैसे गलत दे दिया. तो जेंटलमैन गिव मी अ लिफ्ट टिल हियर. यहाँ पे भी समझ नहीं रहा कहाँ पे, तो बहुत मुश्किल जा रहा है यहाँ पे पहुँचना. बैकपैकर्स पैराडाइज. आई वांट टू गो बैक साइड. बैकपैकर्स पैराडाइज. फ्रॉम वेयर? Right now we are in Ella and we have reached our hostel. It's the backpackers paradise. So let me take you in. इसे हॉस्टल कम कैंप साइट बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा. This is the common area. This is the kitchen and these are the tents or the rooms. Let me show you my room. This is my tent. This is my tent, my room. I'm really excited about this place. ये आपुन की टाइप की जगह है, आपुन की.
I'm back to my hostel. I was supposed to go out, but यहाँ पे आने के बाद यहाँ से निकलने की इच्छा ही नहीं हुई because of this view. This place is very close to my taste. जज गई मेरे को ये जगह बहुत कम समय में. मतलब यहाँ पे आते से ही मुझे समझ गया था कि दिस इज़ अपने टाइप की जगह. What's up YouTube? I am Ajinkya Band and welcome to this YouTube channel. Right now I am backpacking Sri Lanka and for now I am in LA walking towards the Nine Arch Bridge. Nine Arch Bridge is one of the most important attractions all over Sri Lanka, and it's situated near about 2 to 2.5 kilometers from the station. You have to walk along these tracks to reach the Nine Arch Bridge, and it's a lovely walk. I suggest you to take this walk in the morning so that it's less crowded. It's very crowded in the evening, they say. And सुबह सुबह चलने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों. The construction of this bridge was done by a local builder P.K. Apuhani in consultation with the British engineers. This bridge was built in 1921, and the unique part about this bridge is that it is totally made up from stone, bricks and cement. Initially, this bridge was designed and was planned to be constructed in steel, but due to World War I, all the steel which was allocated for this project was reallocated to Britain's war-related projects at the battlefront. Finally, this is the Nine Arch Bridge. As you can see, it has this amazing architecture. It was built by the British in the colonial era. You can count the 9 arches. As the name is Nine Arches, it has 9 arches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viewing this bridge from this tea gardens out here is an amazing experience. I've never been to a tea garden before. I have been struggling to have a picture with this bridge, with this jugaad. You know, it's really hard to have a picture when you travel solo. It's a picture in which you are there. So this was it about Nine Arch Bridge. The next episode is going to be wild and dangerous because we are going to climb the Ravana Fall. Ravana Fall is one of the deadliest waterfalls in Sri Lanka. तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड बाय बाय.